हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा रेसिपी लेके आई हूँ जो कि यूजुअली बड़े हो छोटे हो सबको पसंद होता है। वो है मंचूरियन। एंड वी विल डू इट इन अ हेल्दी मैनर। मीन्स मेन इंग्रेडिएंट जो मैदा होता है बहुत जन अवॉइड करते हैं, जो कि हेल्थ कॉन्शियस पीपल होता है, वो मैदा इसमें ऐड ही नहीं होगा। एंड हम लोग मंचूरियन बनाएंगे। हुआ ना हेल्दी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मंचूरियन बनाने के लिए हमें कैबेज चाहिए, वो भी पूरा फाइनली चॉप्ड एक बॉल पे। 1 चॉप्ड ओनियन चाहिए। ग्रेटेड गाजर चाहिए हम लोगों को। सॉल्ट टू टेस्ट। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून of chili powder, teaspoon of raw jeera, 1 teaspoon of garam masala, 1 teaspoon of coriander powder we will add, 2 teaspoon of soya sauce, 2 tablespoon of oil we will add into the mixture, 5 to 6 teaspoon of rice powder we will add to the mixture, 5 to 6 teaspoon of corn flour or arrowroot we will add. Grated ginger we will add to the mixture. Mix the mixture well so that all the masalas will be mixed into it. You can see the texture of the mixture so that we can make small balls of Manchurian. Turn on the flame and put the kadhai on it and add some oil for fry the Manchurian. So we will make small Manchurian balls for deep fry. We will fry the Manchurian balls until it turns golden brown. We will take out the Manchurian balls on a tissue paper or a paper so that oil will be soaked. So you can see our Manchurian ball are ready for next step, and it looks very crispy and its color is also golden brown. So for the mixture I have taken onions and capsicum in a cubes size, chopped garlic. We will add chopped garlic into the oil. Grated ginger we will add into it. We will fry them together. We will also add the onion and capsicum which we have cut. We will mix them properly and leave them for fry. Now we will add some salt to it, some ajinomoto, black pepper, garam masala, meat masala and kasturi methi, black salt, soya sauce, chili sauce, you can add red chili sauce also, tomato ketchup. We will take a bowl and in that we will add some arrowroot or corn flour and put some water and mix it well, and you can see the consistency also. We will pour that mixture into the pan and mix it well.
We will put the Manchurian balls which we have earlierly fried. And we will mix them together very well. Then we will add some water to it and let them cook for some minutes. Then we will add coriander, finely chopped coriander into it. It will taste very great. Mix the whole mixture very well. So guys, here our Manchurian is ready and we will serve it into a plate. सो गाइस आप लोग देख सकते कितना टेस्टी लुक आ रहा है। मीन्स लाइक हम लोग जैसे रेस्टोरेंट पे खाते हैं मंचूरियन वैसा ही पूरा दिख रहा है और टेस्ट भी वैसा ही है। सो इसे आप घर पे ट्राई कीजिए। सो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये रेसिपी को आप घर पे बनाइए और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर कोई एडवाइस सजेशन या आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है देन उससे भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।